kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 2, natural resources. Okay, so let's start now this chapter, kids. Ever since the earth was inhabited, okay, जिस तरह हमारी पृथ्वी पर जब उद्गम हुआ, humans and other life forms have depended on them. मनुष्य और अन्य जीवन सब इस पर आधारित रहने लगे. That exist freely in the nature to survive, क्योंकि यह हमें प्राकृतिक चीजों से घेरे है. These things include, इसमें include है water, seas and fresh water, land, soil, rocks, forest, vegetation, animals, including fish, fossil fuel and minerals. They are called natural resources and are the basis of the life of the earth. All these mentioned above the natural, यहाँ तक कि यदि इनको मेंशन किया जाए, ये है जैसे नेचुरल एंड दे एग्जिस्ट इन द नेचर, इन्हें प्रकृति से अलग नहीं गिना जा सकता. नो ह्यूमन क्रिएट्स देम, इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है. वी टैप इनटू देयर सप्लाई टू सर्वाइव एंड आल्सो द फंक्शन प्रॉपर्ली. ये तो केवल प्रकृति का इतना सहयोग करते हैं कि उस सुविधा का पूरा लाभ उठा सके. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल कनेक्टेड इन अ वे. Therefore, if one is taken away, it will affect the supply or the quality of all others. For example, if water is eliminated from an area, यदि water को एक area से eliminated कर दिया जाए, vegetation को, soil को, animals को, even the air को, that area will be affected negatively. तो वह जीवन योग्य भौगोलिक परिस्थिति नहीं होगी. Below here some simple illustration of the some great things that we get from some natural resources. जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास वाटर, एंड एनर्जी फ्यूल है हमारे पास ऑयल. वुड, फूड एंड मेडिसिन, पल्प, रिक्रिएशन, होम द वाइल्ड लाइफ, रबर, कॉटन किससे मिलता है हमें? फॉरेस्ट से. कंस्ट्रक्शन शेल्टर है हमारे पास रॉक्स, ज्वेलरी, ग्लास, कैन्स एंड द सेरेमिक, ये है हमारे पास मिनरल्स. एग्रीकल्चर होती है सॉइल पर, फूड, वूल और रिक्रिएशन होता है एनिमल्स पर. ओके, चलिए. नेचुरल रिसोर्स कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली. जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम्ड किए जाते हैं और इनडायरेक्टली वे में भी. फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डिपेंड डायरेक्टली, मनुष्य पर आधारित होता है कि उसे डायरेक्ट कंज्यूम करेगा या इनडायरेक्ट वे में. जैसे फॉरेस्ट से मिलता है फूड, बायोमास, हेल्दी, रिक्रिएशन एंड द इंक्रीज लिविंग कंफर्ट, जिससे कि हमारा जीवन कंफर्ट बन सके. इनडायरेक्टली फॉरेस्ट एक्ट एज द क्लाइमेट कंट्रोल. जो इनडायरेक्टली होता है वो क्लाइमेट कंट्रोल पर डिपेंड होता है, फ्लड कंट्रोल पर, स्टॉर्म प्रोटेक्शन पर एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पर. ओके, चलिए सबसे पहले किड्स पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स. वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है. इट इज यूनिक नेचुरल रिसोर्स अमंग ऑल द सोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर यह सबसे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है. नो लाइफ फॉर्म कैन बी सस्टेन विदाउट वाटर. बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है. इट इज एसेंशियल फॉर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, क्योंकि मुख्य रूप से जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं सभी पानी से डिपेंडेबल है. लाइक जैसे फूड प्रोडक्शन, industries like energy production and manufacturing. It plays an important role in the economic development and the general well-being of the country. Next है United National State. The water is a social. जो United National State है वो एक सामाजिक है एंड कल्चर गुड्स में है, नॉट मेरली एज इकोनॉमिक कमोडिटी, बल्कि कोई आर्थिक व्यापार में नहीं है. केमिकल वाटर इज अ कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन. यदि केमिकल वाटर को में ऑक्सीजन इंक्लूड कर दी जाए एंड हाइड्रोजन विद हाईली डिस्टिंक्टिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉस्पेरिटी, इट हैज अ केमिकल फॉर्मूला H2O. ठीक है, इसे पानी में यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिली हो तो उसका क्या फॉर्मूला है? H2O. आउट ऑफ ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, यदि पृथ्वी से पानी को निकाल दिया जाए, 97% ऑफ द वाटर इज सैलिन, क्योंकि 97% भाग पर केवल सैलिन वाटर है. और सीन में केवल 3% वाटर है.
फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द रिवर में है, स्ट्रीम्स में है और ग्लेशियर्स में है। देयर इज इनफ फ्रेश वाटर, केवल जो साफ पानी अवेलेबल है ऑन द प्लेनेट पर फॉर करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बट इज डिस्टर्ब एंड इमेंसली। फॉलोइंग ग्राफ्स शो द अर्थ वाटर डिस्टर्ब। ओके, यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बताया गया अर्थ में वाटर है 97 है सैलिन वाटर, नमकीन पानी, केवल 3% है फ्रेश वाटर। उसी के आधार पर यदि फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर हमें आइस कैप्स और ग्लेशियर से मिलता है 68% और ग्राउंड वाटर में मिलता है केवल 30%। उसके बाद है हमारे पास फ्रेश सरफेस वाटर का जो लिक्विड है वो लेक्स में है सबसे पहले 87 और उसके बाद स्वयं से 11 और रिवर से केवल 2% में। ओके, चलिए नेक्स्ट है किड्स, गेटिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर। हमें वाटर से एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस हाइड्रो पावर बाय हार्नेसिंग इट्स एनर्जी। यहाँ तक कि जल से हमें सबसे अधिक शक्ति प्रदान होती है कंपेयर टू द अदर रिसोर्सेज। अन्य किसी भी संसाधन की अपेक्षा जल से हमें सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड पावर। वाटर इज considered renewable as well as the having the least solid waste during energy protection. Okay, चलिए फिर है भारतीय सीनरी ऑफ वाटर, सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले सतह का जो पानी का संसाधन है उसको जानते हैं। वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग जैसे लाइक रिवर, लेक्स एंड द फ्रेश वाटर। वेटलैंड्स आर द नोन एज द सरफेस वाटर रिसोर्सेज। और जो भी सतह पर हमें पानी दिखाई देता है उसी को हम वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। प्रेसिपिटेशंस इज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्रेसिपिटेशंस होता है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। फॉर द सरफेस वाटर रिसोर्सेज, प्राकृतिक सतह पर बहने वाले पानी की अपेक्षा, एंड इट आल्सो मेंटेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और यह पृथ्वी पर जो भी सतह पर पानी दिखता है वह उसे एक हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में ढालता रहता है। रिवर्स आर द मेजर सोर्स। नदियां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भारत में वाटर रिसोर्स के साथ है। वाटर रिसोर्स में अनयूटिसेबल एनुअल सरफेस वाटर इन रिवर ऑफ द कंट्री इज 690 किलोमीटर। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक आर्टिफिशियल डैम्स। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मानव द्वारा उसमें आर्टिफिशियल डैम्स की भी शुरुआत बनाए गए, रिजर्वर बनाए गए और ऑल्सो इंक्लूड इन द सेम कैटेगरी हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन। और जरूरत के अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके ऑफ द वाटर का, और जिससे समुचित रूप से उसका प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। वाटर सोर्सेज लाइक सरफेस वाटर ऑफ द वाटर विद इन एक्वीफायर्स आर द नोन एज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो भी जल संसाधन है जैसे सब सरफेस पर वाटर पर तो मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिचर्स फ्रॉम द प्रेसिपिटेशंस मोस्टली इन द मानसून सीजन इन भारत। यहाँ तक कि भारत में जब मानसून आता है तो जो भी सतह का पानी होता है वो धीरे धीरे रिस के कहाँ चले जाता है, अंदर जमीन में चला जाता है। कैनाल इरिगेशन एंड द अदर फॉर्म ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। और जो कैनाल की सिंचाई का या अन्य फसलों की सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो अंडरग्राउंड वाटर है। ओके, रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, द एनुअल पोटेंशियल ऑफ द नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल भारत इज अबाउट 342.43 किलोमीटर। यहाँ तक कि जलवायु अर्थात भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वो करते हैं भारत में बारिश, रेनफॉल, विच इज जो है 8.56% टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ द कंट्री का। द एनुअल पोटेंशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज augmentation for the canal irrigation system is about 89.43 किलोमीटर। राकेश कुमार आर.डी. सिंह एंड द के.डी. शर्मा ने ये हमें बताया है एक्सपेरिमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। वाटर इज अवेलेबल only for a few hours in the most Bharat cities and the quality is also not up to the mark. Water was are also because of the insufficient or low pressure and the erect supplies. The rural population suffers
जो भी ग्रामीण जनसंख्या होती है सफर्स करती है फ्रॉम लो वाटर क्वालिटी को, बट द अर्बन एंड द सेमी अर्बन एरियाज होते हैं मोस्ट प्रोन टू द वाटर स्टोरेज। ठीक है, उनके पास पानी की स्टोरेज करने की क्षमता अधिक होती है। द वाटर क्वालिटी शुड बी सेफ एंड द साउंड एट द microbiological level and the mere continuous supply is not enough. Another aspect is the warm water wastage in the terms of the leakage and the illegal connections. Okay, पानी की वेस्टेज कब होती है? या तो कोई पानी टैप से लीकेज हो रहा हो या फिर इलीगल कनेक्शन हो। नेक्स्ट है ओवरलैंड फ्लो ऑफ द रेन वाटर। द ओवरलैंड फ्लो ऑफ रेन वाटर इज आल्सो कॉल्ड सरफेस रन ऑफ। यहाँ तक कि बारिश का जो पानी होता है जब वो ऊपरी सतह पर भागता है, इट कैन बी द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई इन एरिया। मोस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स of the drinking water in the cities and the towns are linked to these source of the water through pipes। यहाँ तक कि पाइप के जरिए जब स्वच्छ पानी पहुंचाया जाता है घरों तक, a river and its tributaries in area constitutes the drainage system। Each such drains an area called drainage system is divided by the total surface area of the drainage basin। We can obtain drainage density है हमारे पास। ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ चैनल्स एंड एरिया ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। चलिए, ड्रेनेज डेंसिटी हेल्प्स अस करती है वो हमारा डिटरमाइन सरफेस रन्स ऑफ करने में एंड द वेजिटेशन कवर करने में। व्हेन वेजिटेशन कवर इज एडुकेट, यदि हमारी वेजिटेशन कवर्ड होगी सरफेस रन ऑफ होगा मे बी मिनिमल। ओके, इट इज बिकॉज वेजिटेशन कवर परमिट्स permeability, which in turn promotes groundwater resources to overcome water storage during dry periods। Drainage density, जो drainage density है, is also an indicator of the drainage pattern। Drainage pattern is the design of a river and its tributaries। By studying drainage, it is possible not only to determine geological structure of an area, but also devise way of the using river water advantageously without compressing on groundwater surface resources। It should be mentioned that groundwater excavation can be most disastrous। Water, when impounded up built dams, interfaces with both drainage basin and the drainage density and creates new water divides। Though dams are meant to meet water storage, there are many environmental hazards associated with dams। They also change natural drainage density, drainage basin and the drainage pattern of the large area। A number of the large dams like those of Bhakra, Narmada, Sardar Sarovar Dam, the Hind and the Ashwan in Egypt and the Hoover Dam in the USA have been built। चलिए आगे है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कीपिंग वाटर क्लीन, यदि हमें पानी को स्वच्छ, साफ और प्रिवेंटिंग कॉर्डिनेशंस, और उसको रोकना है पॉल्यूशन, प्रदूषण से, इम्प्योरिटीज, गंदगी से, एंड वाटर इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द कंजर्वेशन। उसके संरक्षण के कुछ उपाय हैं। नंबर फर्स्ट है efficient use of water। जितनी जरूरत है उतना पानी का यूज होना चाहिए। Efficient and the economical use of the water special to prevent wastage is most trusted and the best way of conserving water resources to meet increasing demands। Next है sprinkler irrigation। In place of the canals or irrigation through open canals, sprinkler irrigation should be adopted in developing countries। This will prevent loss of the water through evaporation rate। Drip irrigation is very useful। In this method of irrigation, water is supplied through pipes direct to the roots of plants and every drop of water is utilized। Next, recycling and the treatment of effluent of the resource is also an important method of conservation। Next, water harvesting। It involves artificial recharge of the underground water by allowing rainwater to seep underground। उसके बाद vegetation cover, it essential for water harvesting described above। It can also
डाउन सरफेस फ्लो ऑन द रेन वाटर, जब पृथ्वी का बारिश का पानी जब ऊपरी सतह पर घूमता है, ट्रीज एंड द प्लांट्स आर आल्सो एजेंट फॉर अ प्रेशर फॉर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज इन वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। In the context of the rainwater harvesting and conservation of water, the term waters refer to the basin of the tributary. It may have a small stream or it may be have any such stream, but whenever it rains, the water flows through. It finally joins some streams. It proper and the significant management can help to prevent water storages, improves quality of the water and the causes little damage to environment. Okay, to maintain the quality of life, it is essential to conserve water resources and keep them clean and pure. This will also help to meet our increasing demands of water resources for drinking, irrigation, cleaning and for use of plants and animals. Soil is one of the world most important natural resources. Soil मिट्टी क्या है? विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। Together with air, जब हम हवा और पानी के साथ रहते हैं, it is the basic for life of planet Earth. तो हम इसके जब इसी पर ही धरती पर ही जीवन पाया जाता है। It has many important functions which are essential for life. जीवन को जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधनों में से ये एक है। Not only does it play the major part in the allowing us to feed the world's population, यहाँ तक कि वह विश्व में रहने वाली जनसंख्या को जो भोजन मिलता है वो इस मिट्टी के द्वारा ही मिलता है, but it also plays a major role in the recycling of air, water, nutrients and the maintaining a number of natural cycles, thereby ensuring that there will be a basic for life in generation to come. Without soil, the world population, जो भी विश्व की जनसंख्या है, neither would nor could survive. Soil consists of a mixture of grains. जो soil consist करती है बहुत सारी मिनरल्स को मिलाती है, that come from the rock deposit, जो कि चट्टानों से हमें प्राप्त होता है, and sediment beneath them, और उसमें बहुत सारे अवसाद मिले होते हैं। This mixture gives the overall texture of the soil. यहाँ तक कि इसमें मिट्टी में बहुत सारी चीजों का जमाव होता है, namely जैसे sandy loam or the clay. Importantly, soil also contain organic matter. Mainly in the top 20 centimeter, organic matter comes आता है from rotted and the decomposed vegetations के काम, broken down by soil organism. Soil also contains varying amounts of the water depending on the climate and the water holding capacity of the soil. The remaining important ingredients is air. The amount of air each of these components varies in time and across the landscape. This is the magical picture of the ingredients that allows the soil to perform many vital needs of the living beings. Okay, चलिए फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन का। नंबर फर्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग disintegrates the rock in situ and the agents of the radiations like rivers. Winds and the glacier carry his loads over large एरिया ऑफ द लैंड। जो विंड होते ग्लेशियर होते वो अपने ऊपर बहुत सारा वजन ढोकर लाती है पृथ्वी पर। द कलर स्ट्रक्चर मिनरल्स कंटेंट इन सॉइल एज वेल एज द रेट एट विच वेदरिंग टेक्स इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन, और जिससे मिट्टी के कलरों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशंस अफेक्ट रेट ऑफ द वेदरिंग, decomposition of the organic material as well as the types and the kind of the vegetation in the area. Next is biota or the biomass. This may include both the living matters, plants and the animals, as well as their remains. The decomposition of the organic matter provides
humus and the bacteria to do the activity of mixing and shifting of soil materials. The decayed matter also increase chemical actions and lends color and the texture to soil. चलिए आगे है टोपोग्राफी. It includes altitude, relief, slope as well as the directions with respect to sunshine and winds. Gentle slopes favor soil formation than slab slope which favor soil erosions. In water lost area with gentle slopes, soil are poorly drained and suffer from leaching or the downwards movement of nutrients in the soil. Next है time. Soil formation is a time-consuming process for a parent's rock material such as sedimentary rocks. Promote rapid soil formation than igneous and the metamorphic rocks. Okay? चलिए. Next है soil in भारत. भारत में मिट्टी. Soil in the Bharat differs the composition and the structure. Number first है alluvial soil. Alluvial soil है these are formed by the deposition of the sedimentary by river. जो भी नदियों के द्वारा अवसाद इकट्ठी की जाती है, लाई जाती है, they are the rich in the humus and the very fertile. उसमें बहुत सारे humus होते हैं और बहुत ज़्यादा वो उपजाऊ होती है. They are found in Great North Plains में पाई जाती है, लोअर वैली नर्मदा में पाई जाती है, ताप्ती में नॉर्थन गुजरात की तरफ पाई जाती है. The soil are renewed every year और वह प्रत्येक साल वह उसका मिट्टीकरण होता रहता है. उसके बाद है ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल आर मेड ऑफ द वॉल्केनिक रॉक्स. यह जो मिट्टी होती है वॉल्केनिक रॉक से मिलकर बनती है या लावा या उस पर लावा फैल जाता है, उसी को काली मिट्टी कहते हैं. इट इज कंसंट्रेटेड ओवर द डेक्कन लावा ट्रेट विच इंक्लूड पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में. इट कंसिस्ट ऑफ लाइम. इनमें क्या मिला होता है? लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, ऑल्सो पोटाश, बट लेस इन द phosphorus, nitrogen and the organic matters. Next is red soil. These are the derived from the wetting of the ancient metamorphic rocks of the Deccan Plateau. Its redness is due to the iron composition. जो रेड मिट्टी, लाल मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसका रंग लाल हो जाता है. When iron content is lower at this yellow, यदि इसमें आयरन की मात्रा थोड़ी कम होती है तो उस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है या फिर ब्राउन हो जाता है. They cover almost the whole of the Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र and the parts of the उड़ीसा में ये मिट्टी पाई जाती है. आगे है लेटराइट सॉइल. These soils are formed due to the intense leaching and are well developed on the summits of the hill upwards. They are the commonly found in Kerala. मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पाई जाती है केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हिली एरिया, ओडिशा और असम में. नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल. These soil are formed as the result of the accumulations of the organic matter derived from forest growth. वन को वृद्धि करने में सबसे ज्यादा माउंटेन सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दे आर फाउंड इन, ये पाई जाती है हिमालयन रीजन में. डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड. टी इज ग्रोन. जो चाय सबसे ज्यादा उगाई जाती है इसी एरिया में उगाई जाती है क्योंकि इसमें सफोकेंट रेनफॉल की नीड होती है. फिर है डेजर्ट सॉइल. इन द डेजर्ट रीजन में जैसे राजस्थान, सॉइल आर नॉट वेल डेवलप्ड. इस मिट्टी में कुछ भी उत्पादन नहीं किया जाता. एज इवेपोरेशन इज excess of the rainfall. जैसी बारिश होती है तो उसका evaporation होना शुरू हो जाता है. The soil has the high salt content. इस मिट्टी में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा होती है and saline layer form of the hard crust. और ये एक hard crust पर होती है. These soil are the generally sandy. मुख्य रूप से जो मिट्टी होती है sandy होती है, deficient होती है और organic matter से less होती है. Next है soil erosion, मृदा अपरदन. It is the process in which the top fertile layer of the soil is lost. जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और जब उसकी परत कटने लगती है. Due to soil erosion, मृदा अपरदन के कारण the soil becomes less fertile. जो मिट्टी होती है वो जो ढीली पड़ जाती है तो वो उसका उत्पादन कम हो जाता है.
द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी लाइट, जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा लाइट होती है, विच इज इजीली कैरिड बाय विंड, जो ऊपर के कण होते हैं वो हवा या पानी द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फोर्सेस इज नोन एज द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। देयर इज एजेंट्स लाइक wind, water, deforestation, overgrazing by cattle, etc. cause soil erosion. The various factors of the soil erosions are: number first है wind. When strong wind blow, जब हवा बहुत तेज गति से चलती है, the top soil along the organic matter is carried away by the wind. तब हवा के द्वारा जो बहाकर लाया जाता है और जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसी को wind erosions कहते हैं। This happens more often when the land is not covered with grass or plants. Such conditions are very common in desert and semi-desert regions where strong winds blow very frequently. Next है water. When it rains in the hilly area, जब पहाड़ों पर ज्यादा अधिक बारिश होती है, the soil gets washed away towards the plains. जो नदी और जो मिट्टी होती है वो धुल धुल करके जो उसके अवसाद होते हैं मिट्टी में वो पानी के साथ बह करके समतल प्लेन जगहों पर आ जाते हैं। The running water deposit the mineral rich soil in the river bed and over the years this deposition of the soil can change the course of the river. This can lead the flood which causes the destructions, life and the prosperity. Water erosion lead to loss of the agriculture polluter. Next है overgrazing. When the cattle are allowed to graze on the some fields, जब पशु द्वारा जब घास फूस खाई जाती है उनके पैरों से, all the available grass, उनके आसपास जो भी घास होती है जब वो उसे खाते हैं, including the roots are eaten by them, तो वो जो जानवर होते हैं वो उसकी घास की जड़ भी उखाड़ लेते हैं। This makes the topsoil vulnerable to wind and the flowing water, leading to the soil erosion. Next, deforestation. Humans have taken land from the forest to cultivate in order to feed the ever increasing population and to the build houses and industries. Cutting down of the trees on a large scale for these purposes deforestations the group of trees hold the soil together, thus preventing the soil from sitting uprooted. When large area of the forest are cleared, the topsoil gets eroded by winds and the flowing water. Next है soil conservation. Preventing of the soil erosion is also called conservation of soil. The soil erosion can be prevented by the following ways. Number first है afforestations. Planting new trees and plants is called afforestations. We live because plants live. If the plants die, all living things will also die. Thus, whenever trees are cut down, new trees should be planted. यदि तुम कोई पेड़ काटते हो तो उसके बदले तुम्हें कोई नया पेड़ लगाना चाहिए. Planted trees in hilly area are most effective for conservation. Next है crop rotation. Crop rotation is the practice of the growing a series of the dissimilar of the different types of crop in the same area in the sequenced seasons. It is done so that the soil of the farms is not used for only one set of the nutrients. It helps in the reducing soil erosion and the increasing soil fertility and the crop yields. Next है terrace farming. In the hilly area, जब पहाड़ी क्षेत्र पर farming is done by the cutting step, पहाड़ों को काट करके, जब hilly area पे पहाड़ों को काट करके जब थोड़ा मैदान समतल कर लिया जाता है, they slow down the process of water and the soil removed from one step to deposit on the next step. और जब पानी बहाया जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना आप ही कन्वर्ट होता चला जाता है। This the soil is never completely lost. इससे मिट्टी कभी भी lost में नहीं जाती. This is terrace farming. इसी को हम zoomy कृषि या terrace farming कहते हैं. Okay? Hello kids. चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम building dams. Okay? चलिए डैम्स आर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लड. जो डैम्स होते हैं वो फ्लड को रोकते हैं, विच नॉट ओनली डैमेज द क्रॉप्स बट ऑल्सो वॉश अवे द टॉप सॉइल. नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स. द कवर ऑफ द प्लांट्स. जो प्लांट्स की कवरअप होती है ट्रीज की होती है अराउंड द फील्ड्स के चारों तरफ जो
फील्ड के चारों तरफ जो ट्री से या प्लांट से एक बेल्ट बनाई जाती है, ऑल्सो ब्रेक द स्पीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, उसका कार्य होता है तेज से तेज हवा के प्रभाव को रोकना। द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे, जिससे कि वहां की मिट्टी, खेत की मिट्टी उड़कर दूसरी तरफ ना जा सके। नेक्स्ट है एम्बैंकमेंट्स, बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्बैंकमेंट, जो एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार की जाती है उसे एम्बैंकमेंट कहते हैं। Along the banks of the rivers can protect field from the floods, जो कि बाढ़ से हमारी रोकथाम करती है। These embankment prevent the fast overflowing rivers and the rainwater from washing away the hug amount of the rich fertile soil. Next है Van Mahotsav. It is an annual tree planting festival started by the government of the Bharat. यहाँ तक कि पेड़ों का ये जो एनुअल ट्री प्लांटिंग होती है, जो प्रत्येक साल वर्ष भर जो एक वनों का महोत्सव चलाया जाता है, द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नीड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड सॉइल, जिसका काम होता है फॉरेस्ट और सॉइल को कंजर्व करना। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। वाइल्ड लाइफ एक है भगवान के द्वारा दिया हुआ अमूल्य उपहार है। टू दिस प्लैनेट, इस ग्रह पर, द टर्म वाइल्ड लाइफ not only caters to wildlife animals but also takes into account all undomesticated life forms including birds, insects, plants, fungi and even microscopic organisms। यहाँ तक कि जो वाइल्ड लाइफ है वो एक प्रीशियस गॉड गिफ्ट है जो प्लेनेट को दिया गया है। इसी से जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे बहुत काम आते हैं, और यहाँ तक कि यह भी एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन हिज अर्थ, यहाँ तक कि पृथ्वी पर यह मेंटेन करने में काम आते हैं अर्थ इकोलॉजिकल सिस्टम में। जैसे एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, मैरीन स्पाइसीज आर द इम्पोर्टेंट एज ह्यूमन, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे एक ह्यूमन इम्पोर्टेंट है प्लेनेट पर, ऐसे एनिमल्स भी, प्लांट्स भी और मैरीन स्पाइसीज भी इम्पोर्टेंट है। Each organism on the earth has a unique planet, special way, but sadly today many of the animals and the birds are getting endangered। यहाँ तक कि आज बड़ी दुख की बात कही जा सकती कि मनुष्य ने ऐसे कारनामे शुरू कर दिए हैं जिससे वो जो भी जानवर है, पशु है, प्लांट है, सभी को कुछ न कुछ हानि हो रही है, सब खतरे में है। Catching and the hunting of the animals for furs, jewelry, meat and leather are other great factor contribution to wildlife extinctions। यहाँ तक कि मनुष्य ने क्रॉचिंग एंड द हंटिंग करने के जानवरों की खालों से बहुत सारी चीजों को बनाना, जैसे उनकी फर से फर बनाना, ज्वेलरी बनाना, मीट बनाना या फिर लेदर की कार्य करना, अदर ऐसी फैक्ट्रियां भी खोल दी है। इफ सोन नो steps are taken to save wildlife, it would be long when they will find a place only the list of the extinct species, and that would not be all. The extinction of the wildlife species will certainly have a fatal impact on human race as well. So far as humans, it becomes a great responsibility to save the wildlife, our planet, and the most importantly our own selves। okay, चलिए नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नंबर फर्स्ट है बायोमास। फॉरेस्ट आर द ग्रेटेस्ट रिजर्वर ऑफ द बायोमास, लिविंग मटेरियल ऑन द अर्थ, फूड चेन्स एंड एनर्जी फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम द बायोमास। नेक्स्ट है स्पाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरेस्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्लैनेट एंड द एनिमल स्पाइसेस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन अर्थ। द डोमिनेंट varieties hold the key for distribution at the micro level। Next, a diversity of flora and fauna. The term flora is used to describe all the planet of the region listed by the species, and the fauna refers to all the animals species of a region। Diversity of flora and fauna can be found only in forest। भारत is rich, भारत सबसे ज्यादा rich country है फ्लोरा एंड फ्यूना की दृष्टि से।
देयर आर मोर देन, इसमें लगभग 47,000 स्पाइसेस हैं ऑफ प्लांट्स के. ऑफ दिस अबाउट 15,000 फ्रॉम द कॉन्स्पायस वेजिटेशन कवर्स एंड मोर देन 35% ऑफ these plants are endemic and the native to Bharat. In respect of the flora, in respect of the fauna, there are the about 89,450 species. Of these, 209 are amphibians, 390 mammals, 456 reptiles and other species. Next है resources vulture है, value है. There are the vast meadow in Himalayan forest where animals graze. यहाँ तक कि सबसे ज्यादा एक पहाड़ी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पशु चारण के लिए सबसे ज्यादा चरगाह के क्षेत्र मिल जाते हैं. फिर है 100 ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक पेपर, हर्बल, मेडिसिन, फ्रूट्स, फ्लावर, टुपरनटाइन, लैक, ऑयल, हनी, सैंडल एंड द परफ्यूम एक्सेट्रा कम फ्रॉम फॉरेस्ट. नेक्स्ट है इकोलॉजिकल वैल्यू. The ecological values of forest outweigh all other uses of forest. Trees in the forest are basic to survival of life on earth. Trees use up carbon dioxide in air and given out oxygen which the animals and the human beings breathe. The structure and the working of the ecosystem depends entirely on the forest plant and the animals in the forest together with their physical habitat represent in ecosystem. ओके, चलिए फ्लोरा, फॉरेस्ट एंड द वेजिटेशन डिस्क्राइब करते हैं. फ्लोरा है, इट इंक्लूड प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन लिस्टेड बाय स्पाइसेस. फॉरेस्ट है a large area covered with plants of one particular types of the different types. Next, vegetation. It includes assemblies of the plants, spices and the grasses growing in a particular environment. Okay, chale. Different flora can be found in the different types of environment. It may be thick or dense. Next, each forest may have different types of flora and its vegetation. Next, similar plant and the trees are the found in a given environment. Flora can be categorized on the basis of species. These can be categorized on the basis of vegetations. It may be categorized on the basis of the type of the foliage, for example, rainforest, shrubs and the grasslands. Okay, chale. Conservation of wildlife and natural wildlife and the vegetation is our wealthy. Natural wildlife और vegetation क्या होता है हमारा is our wealthy, धनवान है. Both plants and the animals together maintain the ecosystem which is very important for our survival. यहाँ तक कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं दोनों मेंटेन करके रखते हैं, इकोसिस्टम को बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा सर्वाइवल चलता है. Both natural vegetation and the wildlife is under threat due to the natural as well as man-made factors. Okay, many species have become vulnerable and endangered, and some are on the verge of the extinctions. Deforestation, soil erosions, mining, industrialization, constructional activities, forest fires, tsunami, and the landslides are some of the human-made and the natural factors, which together accelerate the process of the extinction of these great natural resources. Poaching example है the illegal hunting, fishing, trapping or eating of wild animals is another factor responsible for extinctions of many animals. Okay, चलिए. The tiger है जैसे Panthera tigris, one of the world's most beautiful and the reversed animals stand near the bank of the extinctions. Since the turn of the century, its habitat and the numbers have been reduced by up 95% in this century alone. 3 subspecies of the tiger were driven into extinctions, including the Bali, Javan and the Caspian. Tragically, the remaining 5 subspecies are the risk of the meeting the same fate. The tiger faces onslaught of the poaching throughout its range. In 1991, 1/3 of the Siberian
1/3 of the Siberian or the Amur tigers were killed to meet the demand for their bones and other parts. In addition, tigers compete with expanding populations of human industries for land and flour, and are killed by the poachers when interfering with the plants of man. If these trends continue despite many laws and conservation effects, the white tiger may soon be doomed to extinctions. Okay, chaliye. Animals are prized for collections and illegal trade of the hides, skin, nails, teeth, horns, as well as the feathers. Some of these animals are जैसे tigers, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, and peacock. There is a balance in the environment if the relative number of the species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species due to the discriminate killing. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of the extinctions. Okay, चलिए number first है awareness programs like social forestry, joint forest management, and the One Mahotsava should be encouraged all the regional and the community level. Next, strict law of the check poaching should be formulated. Number next है Project Tiger. Project Tiger है one of the most successful wildlife conservation venture, Project Tiger, which was initiated way back in 1972. 1972 में सबसे ज़्यादा most successful जो wildlife conservation था वो था Project Tiger. Has not only contributed to the conservation of the tigers but also of the entire ecosystem. This project is sponsored by Minister of the Environment, Forest and the Climate Change. About 47 tigers reserve was situated in the more than 17 regional including Corbett National Park and Ranthambore National Park are part of this project, which conducts assessment of the numbers of tigers, their habitat, hunting habits under the supervision of the Tiger Task Force. Project Tiger has seen significant success in recovery of the habitat and the increasing in the population of the tigers in the reserve area from a scanty 268 in 9 reservoirs in 1972 to about 1028 reservoirs in 2006 to 2000 plus tigers in 2016. Okay, chaliye. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.